Okay, hello, good evening. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are back with another Hindu analysis. It's 11th of October. It's Friday. The day is Friday. The weekend is approaching. And we are ready for another Hindu analysis as well as a Menti quiz. It's Friday, so it's time for another Menti quiz. We had the previous one on Tuesday. And today's Menti quiz is on the month of May. So we'll have a quick Hindu analysis today, and then it would be followed by a short Menti quiz. How many of you are here with me today? Can I get some responses in the chat box? Divij is here, Adrija is here. Okay. Let me share my screen. Okay, here's the screen. Tanishka is here, Dhriti is here. ठीक है, सही है. Okay, so the screen is visible. I'm hoping it's visible now, and I'm clearly audible and visible as well. If yes, then let's start in a few more seconds. Let few more people join us, and then we shall start the class. Okay, Ronit is here, Devanshi is here, Varun is here, Divyansh is here, Alankrita is here. Very good evening to all of you. कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल है? कैसी चल रही है तैयारी? सब लोग मजे में हैं? बढ़िया चल रही है सबकी prep? Are we guys ready to start today's session? Hi Riddhi. Sonal is saying, are you from Hyderabad? No, I am not from Hyderabad. I was in Nalsar, Hyderabad for 5 years. So I have a close connection with Hyderabad. I stayed there for 5 years as part of my graduate degree. I love the culture. I love the food. I love the people. Very warm, welcoming people, Hyderabadis. Unfortunately, I could not learn a lot of Telugu. But yes, I did try to learn some bits of it. So yeah, that's about it. Chalo, abhi I'm based in Delhi. So right now I am in Delhi and I am loving this as well. Is everyone ready to start today's class? Are we guys ready to start today's Hindu analysis and then have a quick but very interesting Menti quiz? If yes, I need some responses in the chat box. Give me a ready in the chat box. Okay, everyone is ready. ठीक है, so start करते हैं आज की क्लास with that. All right, so let's look at the agenda for the day. What is the agenda? आज हम करेंगे काफी सारी diverse news cover. थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आज हमें Menti quiz भी करना है. But let's look at what's the agenda. First, we have the news which is related to Tele MANAS. So Tele MANAS was an initiative started by the Ministry of Health in the year 2022. And it has now, the news is that it is now being expanded to the territories of Puducherry and Lakshadweep. So that is the news. So we'll look a little bit about what is Tele MANAS and what are the data which has been collected by the ministry. What is the data with regards to Tele MANAS helpline? Okay. Then there's an editorial article on litigation in India. What are the challenges? Why are there delays in our cases and judgments? What are the possible solutions? So we'll have a quick look at that. Then there is another interesting editorial article about UK, which is United Kingdom, leaving Chagos Islands. Chagos Island is in the Indian Ocean near Maldives and Mauritius. And why is UK leaving it? And what can we learn from that particular whole scenario? We'll look at that. Then we have the Nobel Prize in Literature, which has been awarded to whom? Chat box में बताओ जल्दी से. Nobel Prize in Literature किसको मिला है? Tell me the name of the lady and also her ethnicity, like which country is she from. Tell me in the chat box very quickly. I'm expecting that all of you must be aware of this news. Major news hai ye to. Then RAFA retires. Who's RAFA? कौन है RAFA जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? Can you guys tell me in the chat box? Who's RAFA? Who's dearly called RAFA? Who has retired?
Then, of course, we have our Menti Quiz. This is the code of the Menti Quiz. We'll have a quiz which is approximately 14-15 questions today, but interesting questions. Some easy questions, some moderate questions, some difficult questions, some offbeat questions, some laddu questions. So, yeah, that is that. Then, of course, we have 3 new words of vocabulary. So, that is the agenda for today's session. And let's begin without any further ado. Okay, let me look at some responses in the chat box. Yes, Han Kang from South Korea. 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि someone who is not from Europe has received the Nobel Prize for Literature. Previous 2 years it was being won by European authors. So yes, and Rafael Nadal, the world famous tennis player from which country? Country पता है आप लोगों को? Which country is he from? उस कंट्री का एक और अभी यंग टेनिस प्लेयर है who is creating a lot of sensation. उसका भी नाम मुझे बता दो चैट बॉक्स में. The country and the new young player who has recently won multiple Grand Slams, same country, and making a lot of news these days. Okay, so we are talking about the tele mental health assistance to reach Puducherry soon, Puducherry as well as Lakshadweep. So what is this Tele Manas? So this is a mobile helpline where you can contact to get assistance, to get help with regards to your mental health issues. Manas ka Tele Manas ka full form hai Tele Mental Health Assistance and Networking Across States. That is the full form of Manas, Mental Health Assistance and Networking Across States. This is a 24/7 helpline which was launched by Health Ministry in the year 2022. 24/7 Ministry of Health. Can any one of you tell me the helpline number? क्या आप लोगों को याद है? ये न्यूज हम क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. टेलीमानस हमने 1-2 बार डिस्कस किया है, मुझे याद है. कैन यू गाइस टेल मी द नंबर ऑफ द हेल्पलाइन जो आपको डायल करना होता है टू अवेल दिस पर्टिकुलर सर्विस? तो ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बहुत सारा डेटा रिलीज किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने. द डेटा विच दे हैव कंपाइल्ड ओवर द कोर्स ऑफ past 2 years कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स लोग लेके आ रहे हैं इन द टेलीमानस इनिशिएटिव. सो द परसेंटेजेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. 14% of the cases were related to sleep disturbances and 14% were related to sadness of mood. 11% were related to stress. 9% were related to anxiety. तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे जो लोगों ने फेस किए एंड टेलीमानस से एड्रेस किए. उसके अलावा टेलीमानस का अगर आपसे कवरेज पूछें अभी तो इट इज covering approximately 34 states combined with union territories. So states plus union territories मिला के 34 regions. And it is available in how many languages? It is available in 20 languages. इसमें काफी सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड हैं. और क्या पता होना चाहिए आपको? और भी काफी सारा डेटा है इसमें. जेंडर डेमोग्राफिक डेटा भी आया है, एज डेमोग्राफिक डेटा भी आया है. इसमें बोला गया है कि 56.15% ऑफ द कॉलर्स वर मेल. मतलब males are facing more mental health issues in India as compared to females, which is, I believe, not surprising to me at least, क्योंकि women are much better equipped at handling their emotions, handling their stress. Also handle their issues with their friends. And you that coping mechanism. The solution which guy friends give are those solutions on a public platform, but you guys know what I'm talking about. And age demographic which the health ministry has released is that 18 to 45 years of age of people of this age are 71.5% of the callers. यानी कि 70% से ज्यादा लोग 18 से 45 की एज में, यानी कि द यंग पॉपुलेशन, द फर्टाइल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, 70% of them are facing mental health issues. Not 70% of them, the total callers जो थे उनमें से 70% इस एज ब्रैकेट में. तो most callers are seeking mental health advice for their own. 70% अपने लिए mental health advice seek कर रहे हैं and approximately 20-30% are seeking it for someone else they care about. उसमें से इन्होंने बताया कि 93% were routine calls, normal calls, 3.5% were emergency calls, 3% were suicide related calls, which is also a problematic thing कि इतने सारे लोग suicides के लिए कॉल कर रहे हैं. It's a good thing as well as bad thing. Bad thing क्योंकि इतने सारे लोग suicide करना चाहते हैं. Good thing because they are at least not hesitating to approach someone for help, which is a good thing.
एंड 2.2% ऑफ द कॉल्स वर प्रैंक कॉल्स। तो मस्ती मजाक करने के लिए भी लोग कर देते हैं कॉल, क्योंकि फ्री हेल्पलाइन है, तो हमारे देश के लोग हैं ही इतने बढ़िया महान, तो प्रैंक कॉल्स भी हैं। ठीक है, तो टेलीमानस के बारे में आई थिंक इतना काफी है। काफी इनिशिएटिव्स ले रही हैं गवर्नमेंट टू कीप द प्राइवेसी ऑफ द कॉलर्स इंटैक्ट, क्योंकि देयर स्टिल अ लॉट ऑफ टैबू रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था। एंड many centers of excellence have been established. 23 telemental centers of excellence have been established with the National Institute of Mental Health and Neuroscience as the nodal center. ये मैं लिख देता हूँ, National Institute of Mental Health and Neuroscience. This is the nodal center for this particular initiative, and इनको tech support दे रहा है IIT बैंगलोर, एंड आर्किटेक्चर भी दे रहा है IIT वो तो मास के बारे में आई थिंक मोस्ट थिंग्स। अभी 51 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 34 थे, अभी वाले दो मिला के 36 हो जाएंगे, विच मींस इंक्लूडिंग पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। एंड टोल फ्री नंबर आप लोगों ने बताया मुझे चैट बॉक्स में। Voice is breaking. Is my voice breaking? Am I audible, guys? Give me a yes or no, please. Is my voice breaking? Okay, are we back? Are we back, guys? Is my voice clearly audible? Am I clearly visible now? Can I get a yes or no in the chat box, please? Are we back online? Yes, no. Okay, perfect. Seems fine now? ठीक है। हुआ क्या कि मेरे फ़ोन के हॉटस्पॉट से मेरा लैपटॉप अपने आप कनेक्ट हो गया सरप्राइजिंगली, क्योंकि पहले मैं हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा था, बट नाउ आई कनेक्टेड टू माय वाईफाई, सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट हो गया एंड फ़ोन का डेटा फिनिश हो गया, तो उस वजह से वॉइस ब्रेक कर दी होगी। ठीक है, एनीवे, कमिंग बैक, वेयर वाज आई वाज टेलिंग यू अबाउट द नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच आर अवेलेबल। सो देयर आर 51 ऑपरेशनल सेल्स which are functioning across 36 states and union territories in 20 different languages. 14416, rightly said by you in the chat box as well, is the helpline number. ठीक है, absolutely correct. Okay, चलो नेक्स्ट न्यूज पीस पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, which is the grueling course of litigation in India. अब यहाँ पे क्या बात करी गई? यहाँ पे वही जो इशू है जो हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि litigation in India is a very tedious process for the common man. It is a very gruesome and grueling process for the common man, and लोग घबराते हैं कोर्ट्स को अप्रोच करने के लिए, litigation में आने के लिए, because जजमेंट आते आते ही इतने सालों बीत जाते हैं कि फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बचता। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग व्हिच इज लाइक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा ये लाइन कहीं ना कहीं, कि अगर देर से जस्टिस दिया तो वो जस्टिस नहीं दिया उसके बराबर है। तो ये आर्टिकल किस लिए आया है, एडिटोरियल आर्टिकल हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला था एक कॉन्फ्रेंस में कि इंडियंस आर फेसिंग अ ब्लैक कोट सिंड्रोम, जहाँ पे उनको ब्लैक कोट वालों को देख के हाइपरटेंशन होने लगती है, उनको उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो ऑल्दो इट वाज सेड इन अ सिंबॉलिक वे, बट जो एक्चुअल इशू है दैट इज रियल, कि पीपल डू हैव certain sense of phobia in approaching the Indian legal system, in approaching the court, in approaching lawyers, and having faith in the Indian judiciary. क्योंकि Indian judiciary का जो हिसाब किताब है, the system which is in operation as of now is quite inefficient, it's quite slow, it's quite, I would even go out on a limb to say corrupted, right?
सो वही सारी चीज़ें हाईलाइट करी हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने कि देर इज नो इफेक्टिव केस मैनेजमेंट, देर इज नो इफेक्टिव इंसेंटिव्स फॉर जजेस टू क्लियर दोज पेंडेंसीज, देर इज नो टाइमलाइन फॉर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स and conducting witness examinations. There is no particular framework for scheduling hearings on time and limiting the adjournments which are happening. Adjournments पता है ना आप लोगों को क्या होता है? अगली डेट दे देना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। श्योर आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, नहीं सुना तो क्या ही कर रहे हो फिर लॉयर बन के, अगर ये डायलॉग नहीं सुना तो। सनी देओल का डायलॉग है, ठीक है। तो आर्टिकल यही कह रहा है कि ये सारे चैलेंजेस बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं एंड वी शुड डेफिनेटली डू समथिंग टू एड्रेस देम बाय कीपिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन पिक्चर। कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं जो जुडिशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? देयर आर योर जजेस, देयर आर योर लॉयर्स, देयर आर योर लिटिगेंट्स, देयर आर योर विटनेसेस, and there's also the police which plays a very major part in the Indian legal system, क्योंकि एविडेंस वगैरह पुलिस गैदर करती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह पुलिस करती है। तो वहां पे भी एक तरीके से एक लेजी एटीट्यूड भी है, करप्ट एटीट्यूड भी है, और उनके पास इंसेंटिव भी नहीं है कि वो इस चीज को अच्छे से करें। तो काफी सारे सजेशंस हैं जो ये आर्टिकल देता है। आर्टिकल बताता है हाउ जजेस आर अवॉर्डेड यूनिट्स और पॉइंट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस व्हिच दे सॉल्व और डिस्पोज। एंड उसमें भी फिर लूप होल क्या ढूंढ लिया गया है कि जजेस क्या करते हैं पॉइंट्स बढ़ाने के लिए या यूनिट्स अपने बढ़ाने के लिए, दे सॉल्व द इजी केसेस फर्स्ट। तो इजी वाले केसेस करके अपने पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स केसेस जो होते हैं, जो टफ केसेस होते हैं, वो पाइल अप होते जाते हैं एंड उनकी पेंडेंसी बढ़ती जाती है। सो दैट इज अनदर चैलेंज विच वी नीड टू एड्रेस। एंड लॉयर्स को भी काफी सारे इन्होंने बोला है कि लॉयर्स के एंड से भी काफी सारे शॉर्टकमिंग्स एंड लूप होल्स है। लॉयर्स भी in order to earn more money they keep on taking the next date and they keep on lagging the case as much as they can. मल्टीपल रीजंस हैं उसके भी। कई बार लॉयर्स भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डिसीजन आ जाए, बट जजेस जो हैं ऑन देयर विम्स एंड फैंसीज कभी नेक्स्ट डेट दे देते हैं या कभी कोई और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बता देते हैं या कुछ भी। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच हैपेंस व्हिच यू गाइस वुड अंडरस्टैंड व्हेन यू कम टू लॉ स्कूल एंड यू डू सम लीगल इंटर्नशिप्स, व्हेन यू गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यू विल सी हाउ crazy things are in the Indian legal system. जितना fancy movies में लगता है ना उतना fancy है नहीं. It's quite chaotic. Chaotic would be an understatement in my opinion. So yes, the solutions which this article is providing are that we should adopt a data-driven approach. We should form efficient framework where we can schedule the cases and dispose them on time. We should also use technology to incorporate higher efficiency in our systems. तो ये सारी चीजें हैं। एंड जजेस की एक वैकेंसी का बार बार इशू आता है कि जजेस की शॉर्टेज है हमारी कंट्री में। सो मोर जजेस नीड टू बी अपॉइंटेड, मोर पीपल नीड टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू बिकम अ जज। तो वो सारे सॉल्यूशंस भी डिस्कस्ड हैं इस आर्टिकल में। एंड या दैट इज ऑल द आर्टिकल इज अबाउट। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलें। या डू यू वांट टू रीड दिस आर्टिकल ऑन द न्यूज़पेपर? पढ़ सकते हो आप, वैसे मैंने आपको पूरी जिस्ट दे दिया आर्टिकल में जो जो लिखा है। यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। आज क्योंकि हमें मेंटी भी करना है तो मैं बार बार न्यूज़पेपर पे लेके नहीं जा रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल आर्टिकल। न्यूज़पेपर हम एक बार में ओवरव्यू कर लेंगे आफ्टर वी आर डन विद द आर्टिकल्स, ठीक है। द यूके एंड लीविंग लेसन्स फ्रॉम द इंडियन ओशन। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? ये बात हो रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैगोस आइलैंड। चैगोस आइलैंड क्या है? चैगोस आइलैंड मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कहाँ पे होते हैं। पहले तो देखो, ये रहा चैगोस आर्किपेलागो या आर्किपेलाजो, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट। तो आर्किपेलागो या आर्किपेलाजो क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसमें मल्टीपल आइलैंड्स होते हैं एंड इसकी लोकेशन आप देखो, दिस इज योर मालदीव्स एंड यहाँ नीचे आपका मॉरिशियस आता है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये ऊपर श्रीलंका है एंड ये आपका वो है लक्षद्वीप एंड ऑल है, एंड ये इंडियन कोस्ट है ना। तो दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द इंडियन ओशन रीजन। एंड इस पे कंट्रोल किस कंट्री का था? विच कंट्री वाज कंट्रोलिंग दिस आइलैंड अभी तक? द यूनाइटेड किंगडम। एंड क्योंकि कॉलोनलिज्म के टाइम पे इन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स कैप्चर कर लिए थे, द चैगोस आर्किपेलागो और आर्किपेलाजो वाज वन ऑफ देम। इसमें से एक आइलैंड इन्होंने यूएस को भी दे दिया था, लीज पे दे दिया था इन द 1960s फॉर डेवलपिंग देयर एयरफोर्स बेस। यूके का भी यहाँ पे रॉयल एयरफोर्स बेस है, रॉयल एयरफोर्स का बेस ऑन दिस चैगोस आर्किपेलागो। एंड अब फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आया है कि ये टेरिटरी जो है आइडली मॉरिशस के पास जानी चाहिए एंड आप लोग ये टेरिटरी से अपना जो है बोरिया बिस्तरा बांधो और घर को चलो।
तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्मॉल एटॉल्स, कहते हैं एटॉल्स इज द वर्ड, आइलैंड्स के लिए होता है, एंड 7 एटॉल्स हैं यहाँ पे, जिसमें जो नदर्न मोस्ट एटॉल है जो मालदीव्स के पास आता है उसको बोलते हैं पैरोस बैनहॉस। नाम लिख देता हूँ, पैरोस बैनहॉस। अब इस पे मालदीवियन लोग भी अपना काफी ज्यादा क्लेम करते हैं, वो कहते हैं हमारी टेरिटरी में होना चाहिए। मालदीवियन लोग इसको फोल हावी बुलाते हैं, फोल हावी, फोल हावा ही, हावा ही है शायद, है ना, इस टाइप से। हाँ, फोल हावा ही, फोल हावा ही ये लोग बुलाते हैं इसको। एंड मालदीव्स की सदर्न मोस्ट टिप से ये 300 माइल्स दूर है। एक माइल रफली 1.6 किलोमीटर होता है, तो दैट मीन्स लगभग 500 किलोमीटर दूर है ये मालदीव्स के सदर्न मोस्ट टिप से, जिसको बोलते हैं एडू अटॉल। एडू अटॉल, ये मालदीव्स का सदर्न मोस्ट टिप है। वहां से दिस इज लोकेटेड रफली 480 किलोमीटर्स या 300 माइल्स कह लो अवे। तो अब यहाँ पे ये न्यूज में क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि यूके इसको छोड़ रहा है, एक तो ये चीज। दूसरा, इसके मॉल्डिवियन रूट्स क्या हैं? दूसरा, इसको मॉरिशियस को क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज मॉरिशियस की सॉवरेंटी यहाँ पे काफी टाइम पहले से थी, एंड मॉलडीव्स के किंग ने भी 1500 में, 1560 में एक लेटर लिखा था, जो अभी भी पोर्टुगल की एक लाइब्रेरी में, एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है, जो बताता है कि ये जो पैरोस बेनहॉस आइलैंड है ये सुल्तान का है, वहाँ के मॉलडीव्स के सुल्तान का है। एंड उसके बाद फिर मॉरिशियस ने इस पे अपना क्लेम किया जब ब्रिटिशर्स वर लीविंग द एशियन कॉन्टिनेंट। तो फिर वही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चला गया, एंड अब डिस्प्यूट सेटल हो गया है। काफी सारे आइलैंड है। जो मैं यूएस वाले आइलैंड की बात कर रहा था उसका नाम है डिएगो गार्सिया, जो यूके ने यूएस को दे दिया था, दैट इज कॉल्ड डिएगो गार्सिया। तो वहां पे यूएस का कंट्रोल है, यूएस की सॉवरेंटी है वहां पे। तो पॉइंट बीइंग हियर इज कि यूएस का भी एक बेस है इन द इंडियन ओशन, यूके का भी एक बेस है इन द इंडियन ओशन। बट ये इंडिया की सॉवरेंटी के लिए, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट वांट दीज गाइज टू बी इन आवर नेबरहुड एंड एक्सर्ट कंट्रोल ऑन दोज मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि वहाँ का सी एक्सप्लोरेशन जो है ये लोग करते हैं, वहाँ पे नेवल बेस ये लोग बनाते हैं, तो वहाँ से भी इंडिया को एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है, एडवांटेज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। ये डिस्प्यूट चल रहा था 1814 के टाइम से, ये डिस्प्यूट चल रहा है। 1966 में ब्रिटेन ने ये आइलैंड डिएगो गार्सिया वाला यूएस को लीज कर दिया था। मॉरिशियस फिर इंडिपेंडेंट हो गया ब्रिटेन से, कब हुआ था? 1968 में हुआ था मॉरिशियस इंडिपेंडेंट, एंड तब से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि चैगोस आइलैंड को हमें दे दिया जाए। एंड 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट आ गया था कि यूके का राइट नहीं है चैगोस आइलैंड पे, एंड यूके को विड्रॉ करना है इस आर्किपेलागो से। ठीक है, इसमें 58 टोटल आइलैंड्स हैं आर्किपेलागो जो है, एंड उसमें से 7 अटॉल जो है वो यूके के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो दैट इज ऑल वी हैव अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत ज्यादा आपके क्लैट के लिए उतना मैं बोलूंगा रेलेवेंट नहीं है, बट बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। Now we have our Nobel Prize, which is awarded to Han Kang, as you guys rightly said in the chat box, and she's from South Korea. इनका contribution रहा है किस aspect में? Poetic prose that confronts historical trauma. तो historical trauma से related ये poetic prose लिखती थी, लिखती हैं अभी भी. One of the very famous work which she has done, a very famous writing of hers is called The Vegetarian. ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ पे पोएटिक प्रोज लिखती थी। फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा नाजुक है, कितनी ज्यादा थ्रिफ्टिंग है, थ्रिफ्टिंग नहीं, थ्रिफ्टिंग बोलते क्या होता है, रिफ्टिंग बोलते हैं, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, कि कितनी ज्यादा टेम्पररी है, उस पे ये इनका जॉनर था। तो इनको मिला है नोबेल प्राइज, एंड दिस इज इन न्यूज, दिस इज हाईलाइटेड बिकॉज यूरोप के बाहर जाके तीसरी बार, मतलब तीसरी बार नहीं, 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि नॉन यूरोपियन को ये नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। इससे पहले जॉन फॉस एंड एनी एर्नॉक्स को मिला था इन द प्रीवियस 2 years, एंड यस इस बार मिला है हैन कैंग को। तो इसमें और कुछ ज़्यादा तो है नहीं करने को, फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, एंड ये आप याद कर लीजिए। ठीक है जी। देन राफा ने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट। राफा स्टैंड्स फॉर राफेल नडाल, हु इज फ्रॉम स्पेन, one of my favorite players in the sport of tennis. इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे? इन्होंने जीते थे 22 ग्रैंड स्लैम ओवर हिज करियर। ग्रैंड स्लैम्स कौन से होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर। ऑस्ट्रेलियन ओपन,
यूएस ओपन, विंबलडन और आपका फ्रेंच ओपन, है ना। फ्रेंच ओपन होता है क्ले पे, विंबलडन होता है ग्रास पे, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन होते हैं हार्ड कोर्ट पे। तो इन्होंने, इनके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन जीतने का। फ्रेंच ओपन को एक और नाम से बुलाया जाता है। कैन यू गाइस टेल मी द ऑल्टरनेट नेम बाय विच फ्रेंच ओपन इज रेफर्ड टू? आर से स्टार्ट होता है, चलो हिंट भी दे देता हूँ मैं आपको। व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम फॉर द फ्रेंच ओपन? जो नडाल ने आई थिंक 14 बार जीता, आई थिंक ही हैज वन इट 14 टाइम्स, व्हिच इज अ रिकॉर्ड फॉर एनी ग्रैंड स्लैम। मतलब किसी ने, कोई टेनिस प्लेयर ऐसा नहीं रहा है जिसने एक ग्रैंड स्लैम 14 बार जीता हो। सो ही वाज कॉल्ड द किंग ऑफ क्ले, क्योंकि क्ले पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। तो अभी पिछले एक दो साल से ये काफी ज्यादा इंजर्ड चल रहे थे। इन्होंने 20-25 मैचेस ही खेले इन द प्रीवियस 2 years, प्रीवियस 2 seasons, एंड अब ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर द डेविस कप which would happen in November. So Davis Cup would be his last tournament, and then he would hang his boots. Yes, it's called the Roland Garros. Absolutely correct. सही जवाब, Roland Garros बोला जाता है फ्रेंच ओपन को। गहरॉस। ठीक है, तो इतना ही था आज के हिंदू एनालिसिस के लिए। जल्दी से vocab देख लेते हैं आज की, देन विल मूव टू मेंटी क्विज। The first word is mulling. Mulling means thinking about a fact, proposal, or request very deeply and at length. ठीक है, गहन विचार करना, अध्ययन करना, that is called mulling. Synonyms are pondering, considering, think over. Antonyms are forget, ignore, neglect. Then sentences, she began to mull over various possibilities. And the next word is insolence. Insolence का मतलब होता है rude and disrespectful behavior. इसको बोलते हैं impertinence, impudence और being cheeky. Civility, graciousness and politeness are antonyms. She was sacked for insolence. Sacked का मतलब होता है निकाल देना, removed. Okay. Then the third word for the day is gelid. Gelid मतलब होता है icy or extremely cold, frozen, freezing, icy. Antonyms are ardent, blazing, boiling. Sentences: the Titanic passengers could not long survive the gelid waters of the North Atlantic. ठीक है, the first word is gelid, then we have insolence, which means rude and disrespectful, then we have mulling, which means thinking deeply. So that brings us to the end of vocabulary and the Hindu analysis for today's day. The Menti quiz code is this 77222897. I'll put it in the chat box as well. You guys can go there and register very quickly. We'll start the Menti quiz in 1 minute. People who are new to this process, I'll go through the process very quickly. You have to go to a website which is www.menti.com. It is a portal. This is a platform on which we have an MCQ based quiz. One question, 4 options. You have to answer them as quickly as possible. The faster you answer, the more points you get. There's no negative marking. You have to go to menti.com and put in this numerical code, which is 77222897 to participate in the quiz. You guys have 30 more seconds to open the quiz either on your smartphones, devices, or in another tab in your laptop, whichever way you are accessing this class. Till then, I'll present the Menti quiz on my screen. Alrighty. ठीक है. Welcome to the May revision quiz. I hope the screen is visible to everyone. Have you guys registered? Are we ready to start? Are you guys there? Or should I wait for a few more seconds? Start किया जाए मित्रों. Let me see how many players are ready. So instructions are answering all the questions. There is no negative marking. Let me see how many players are ready to play for 14 questions in today's quiz. We have 19 players. Let's start when we have 21 players. So I'm waiting for one more player to join us because we have 22 people on our stream, 21 people now. Are we ready to start? Okay, 21 हो गए, क्या बात है, चलो.
Let's begin today's Menti Quiz for the month of May. A revision quiz, short quiz of 14 questions, a very interesting quiz. And the first question of the quiz coming up on your screen now. Okay, approximately half of you got this right. Thrombosis results in the formation of blood clots, जिससे आपका blood flow restrict हो जाता है थोड़ा सा blood vessels में. It's not reduction of RBCs, it's not hypertension, nor reduction of immunity. Okay, let's look at the leaderboard. Quite a symmetric leaderboard. Boti Mech Boat Face. This is probably a randomized name generated by Minty. So please change your name to your real names, whoever you are. Then we have Sharvi, Vihan, PK, Tintin, Dhriti, Kathy, Deeptakshi, Divyansh, and Nandini. So I'm giving you 10 seconds to change your name on the Minty platform while we move to the next question. 21, 22 players ready for the 14th question. I'll start it in 5 seconds. Take your time and change your name very quickly. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Let's go to question number 2 coming up on your screen in 3, 2, 1. You have to tell me the launch vehicle. Oh my god, only 3 people got this right. It was the Atlas 5 rocket by NASA. It was not the Falcon 9 for this particular program. Mostly in most of the recent space missions, it has been Falcon 9, which is by SpaceX, but this was Atlas 5. So this was a tough question. I agree. He was the fastest and has come on third position. Divyansh is now on first position with 1200 points with a big lead. Then we have Boti, then we have Mukti, Sharvi, Shiv, Vihan, PK, Tintin, Dhriti, and Devanshi. All right, interesting. I have new names as well on the leaderboard. 21 players ready for the third question, which is coming up on your screen in 3, 2, 1. Okay, this was also a moderate level question, I would say. He is the convener of the Chhattisgarh Bachao Andolan, not the Narmada Bachao Andolan. Chhattisgarh Bachao Andolan was again related to environmental protection in Chhattisgarh. And for that, Alok Shukla got the Green Nobel, which is the Goldman Environmental Prize in May. All right, we have new names on the leaderboard. Shweta was the fastest for this question. Good job, and has come up on second position. Divyansh has maintained a big lead, 2100 something points, and we have Shweta, Boti, Ridhi on fourth, Mukti, Ronit, Sharvi, Shiv, Vihan, and Steph. Wonderful. I am loving the competition in today's quiz. 22 players ready for the fourth question. Let's look at the question very quickly. Let's go for it. This is an easy one, easy question. Oh my God. 9 people, 11 people got this wrong, 11 people got this right. It's by Reporters Without Borders. It is a organization. It's a NGO type of organization which releases this index every year.
Okay, everyone on this leaderboard, approximately everyone got this right, but I can see a lot of new names who have come up. Divyansh is still on first, Shweta is on second, then we have Riddhi, Mukti, Steph. Dhriti was the fastest for this one, good job. And we have Boti, Priyanshi, Deeptakshi, and Sonal. Okay, kudos on coming on the leaderboard, guys. 21 players ready for the fifth question. Let's go for it. Kavach was very much in news. Multiple train accidents happened in 2024. Okay, almost half of you got this right. Research Design and Standards Organization, RDSO, has developed the Kavach system. Interesting. Ronit is now on the leaderboard. Riddhi was the fastest for this one. Divyansh still maintaining his lead. And we have Riddhi, Steph, Boti, Dhriti, Deeptakshi, Priyanshi, Shweta, fallen a few places, Mukti, and Ronit. All right, question number six. 22 players ready to play. Let's go to question number six right away. Okay, this was a moderate question. I was not expecting 10 correct responses, but you guys played really well. The Paris Convention was one of the first regulations to protect IP rights in other countries. This came in the year 1883, if I'm not wrong. उसके बाद आया बर्न कन्वेंशन इन 1885. उसके बाद आई थिंक बुडापेस्ट ट्रीटी आई एंड दोहा डिक्लेरेशन तो बहुत रीसेंट है. दिस केम इन 2000s 2001 2002 के आसपास आया था दोहा डिक्लेरेशन. ठीक है. Let's look at who all got this right. Vihan is now on the leaderboard. Sharvi is back on the leaderboard. Okay, Riddhi was the fastest. Divyan still on first position. Riddhi on second. Steph, Boti, Ronit, Vihan, Sharvi, Dhriti, Deeptakshi, and Priyanshi are on the leaderboard. This is going intense. 20 players, 21 players ready for the seventh question. We are halfway into our quiz. Let's go for it. ये तो easy question है, I believe. Not a very tough question. Yeah, majority of you knew this. It is Operation Shakti. This is a test which we did in Pokhran, Rajasthan, and nuclear power हम बन गए थे after this test. काफी international backlash मिला था, but still we became a nuclear power. The day was 11th May, and that is why we celebrate National Technology Day on 11th of May. अटल बिहारी वाजपेयी जी की regime में हुआ था ये test. Steph was the fastest. Riddhi is now on first position. Steph is on second. Divyansh has been displaced from the first position, but is very few points away from those positions. Now on third, then we have Sharvi, Boti, Dhriti, Shweta, Deeptakshi, PK, and Bell. So we have again new names on the leaderboard. Good going, guys. Well played. Let's go to question number 8. 22 players ready to play. ओके 7 पीपल गॉट दिस राइट. क्लीन बीचेस फाउंडेशन जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. दैट वाज अ मेड अप नेम बाय मी. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फाउंडेशन जैसा भी कोई फाउंडेशन नहीं है. मतलब ऐसा रैंडमली होगा, बट ऐसा रेप्यूटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. एंड इट्स नॉट यूनिसेफ, इट्स फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन, FEE करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस देता है फॉर क्लेनलीनेस ऑफ बीचेस. ये न्यूज़ में इसलिए था मे में क्योंकि तमिलनाडु के एक बीच ने अपने एक बीच के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली थी.
तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला. Okay, Steph is now on first position. Riddhi is on second. Then we have Divyansh on third, Sharvi on fourth. Shweta was the fastest for this as well. On fifth position, Bell on sixth, Ronit on seventh, Vihan, Diptakshi, and Doti on other positions on the leaderboard. Question number 9. Out of 14, 22 players ready to play. Let's go to question number 9. ओके, काफ़ी लोगों ने तुक्के मारे हैं इसमें. आई कैन सी गेस वर्क. 8 people got it right. It's 1954 when साहित्य अकादमी was established, and साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है by this academy every year to writers, and the fellowship is the highest award which an Indian writer can get for their literary work, and Ruskin Bond got this honor in 2024. Okay, top 3 people got this wrong. Interesting. Steph is now on first position. Sharvi is on second. Riddhi on third. Shweta on fourth with the fastest response. Divyansh on fifth. Vihan on sixth. Boti on seventh. Bell on eighth. Ronit on ninth. And Deeptakshi on 10th position. The question number 10. We are moving towards the end of the quiz now. 22 players ready to play. Let's look at question number 10, guys. You have to tell me the name of the helicopter. Okay, this was a tough question. I agree. Bell 212 was the name of the helicopter. This was developed by a US based company for the Canadian military. And वही हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी, जो कि जिनकी डेथ हो गई इन दिस क्रैश along with a few other ministers who were in the helicopter. And yes, only 3 people knew this. Okay, Steph knew this, PK knew this, and one more person who's not on the leaderboard knew this. Interesting. All right, Steph is now having a certain lead on the first position with the fastest response. Rest of the leaderboard is pretty much same with PK and Bell interchanging positions. Question number 11 out of 14 coming up on your screen in 3, 2, 1. 9 people got this right. New Caledonia is a French-controlled island territory. It is near Australia though. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक छोटा सा आइलैंड आर्किपेलागो है जिसको फ्रेंच कंट्रोल करते हैं. एक टाइम पे फ्रेंच ने भी बहुत सारी कॉलोनीज कैप्चर कर ली थी, एंड दिस इज अंडर फ्रेंच कंट्रोल. एंड ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज द फ्रेंच इंट्रोड्यूस्ड नेशनल इमरजेंसी इन दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था यहाँ पे. दीज गाइज आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑल. तो इस वजह से ये न्यूज़ में था. एंड न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, तो वो एक फैक्ट है. ठीक है. The control is by French, but the territory is near Australia. Steph was again the fastest for this one. Vihan is now on second position. Divyansh is on third. Sharvi is on fourth. Riddhi on fifth. Shweta on sixth. Boti on seventh. Diptakshi, Priyanshi, Dhriti on eighth, ninth, 10th. Okay, interesting. Question number 12. 22 players are ready to play. Let's go for it. Okay, approximately half of you got this right. It's Mexico. China was on third position.
इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करे मेक्सिको ने, 61 समथिंग बिलियन डॉलर्स, समथिंग लाइक दैट. ओके, लेट्स सी हु ऑल गॉट दिस राइट. काफी क्लोज चल रहा है अभी इस समय फाइट. ओके, स्टेफ इज ऑन फर्स्ट, देन वी हैव शार्वी. रिद्धि वाज द फास्टेस्ट ऑन थर्ड पोजीशन. Shweta, Boti, Vihan, Divyansh, Priyanshi, PK, and Dhriti on the leaderboard. And with that, we move to the second last question of the quiz with 22 players ready to play. The second last question, question 13, on your screen now. Okay, a lot of you got this right. 18,500 feet is the altitude. University of Tokyo Atacama Observatory. इंडिया की जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है वो है हानले में, हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. इट्स इन लद्दाख. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन वन ऑफ द हिंदू एनालिसिस. Right, Steph is maintaining a very big lead, which seems like an unconquerable lead now. Riddhi with the fastest response is now on second. Then we have Boti, Sharvi, Shweta, Priyanshi, Vihan, Divyansh, PK, and Dhriti. The last question for today's quiz and today's Menti is coming up on your screen. Question number 14. Last question on your screen now. Okay, approximately half of you knew this. This book was originally written in the German language and was translated from German to English by a gentleman named Michael Hoffman. And this received the Man Booker International Prize for this year. And that brings us to the end of today's Menti Quiz. Let's look at the final leaderboard. Steph is the winner for today's Menti Quiz. Well performed, Steph. Please reveal your identity in the YT chat box. Who are you? Who is Steph? Please let us know so that we can congratulate you. Then we have Riddhi, who performed really well, like always, now on the second position. So, for a change, there's a new winner for us today. Then we have Boti McBoatface, who performed really well throughout the quiz. You also please tell your name in the chat box. On third position, and who are the other guys? Let me check once again. Sharvi is there, Shweta is there, Priyanshi is there, Vihan is there, PK is there, Dhriti is there, Deeptakshi is there, and Dhriti was the fastest for the last questions. And congratulations to all of you who made it to the leaderboard and everyone who participated in the quiz. Played really well. Today's quiz was a little bit offbeat with many in-depth questions, many out-of-the-box questions. Okay, Ashim was Steph. Wonderful. Well played, Ashim. And who was Boti? Who was Boti McBoat? वो भी बता दो मुझे chat box में please, so that I know. Okay, Alankrita was Boti. Well played, Alankrita. Good performance today. ठीक है, बढ़िया क्विज रहा गाइस, मजा आया. How was the quiz? How would you rate today's quiz? Easy to moderate, moderate to difficult, difficult. What is the rating for today's quiz? I would say it was moderate. What do you guys think? Quiz was difficult, but it was fun. Moderate to difficult. Okay. Interesting. अच्छी बात है. Moderate to difficult तो बढ़िया है. That means you guys got to learn some new things. Really fun. चलो, बहुत अच्छी बात है. I'm glad you guys enjoyed the quiz. Next हम करेंगे the month of May and June for Tuesday. So come prepared. For Tuesday's Menti Quiz, we'll do May and June. May पूरा अभी हुआ नहीं है. थोड़े से न्यूज़ हैं May में जो मुझे कवर करने हैं in the quiz. So May and June we'll do together in
Tuesday is Menti Quiz. So looking forward to that, and I would be now meeting you on Monday with another Menti Quiz. Happy Dashera to everyone who celebrates Dashera. Happy Navmi, happy Dashera, and make sure you celebrate as well as take out extra time to prepare in these holidays. And take care, keep learning, keep preparing. Pitakshi was saying 11 on 10 quiz. Like today's date. अच्छा क्या बात है चलो lovely ठीक है चलो bye bye guys thank you so much signing off see you on Monday Subho Bijoy to you too